रेंज में बैक बेंच वाले लड़के आए फ्रंट पेज पे तू सड़क के महारानी के बेस में मैं संजू बाबा वॉक करता हाथ रख के जेब में देख ले खलनायक में और गुस्से वाला फ्रैक्चर तेरा गैंग और मैं एम्बुलेंस में पहुंचने वाला ना आज कोई है ना कल कोई है तेरे यार दा ता कोई कंपटीशन नहीं ना आज कोई है ना कल कोई है तेरे यार दा ता कोई कंपटीशन नहीं competition नहीं came from the bottom and we winning Sunday in the competition नहीं we came from the bottom and we winning Crossing to the attack. Looked impossible. That's his 100 on a top-class inning. Excellent fielding. Huge appeal. And he's given it. Gigantic six. Oh, undid the batter with a beauty. Direct hit. He's a gun fielder. Launched this superbly. Hello everyone, मैं हूं आपका होस्ट नीरज पुरन राव एंड वेलकम फ्रॉम द बस्लिंग सिटी ऑफ पुणे। दुनिया का सबसे बड़ा ई क्रिकेट गेम रियल क्रिकेट 24 पर हो रहा है JetSynthesys प्रेजेंट्स ग्लोबल ई क्रिकेट प्रीमियर लीग। क्रिकेट, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। कल का ड्रामा कोई फिल्मी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं था। हमने देखे कुछ हाई स्कोरिंग मैचेस, नेल बाइटिंग फिनिशेस एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। डे वन ने हमें दिखा दिया यार कि यह कुछ भी हो सकता है। ये GEPL है एंड एवरी मोमेंट इज अ न्यू ट्विस्ट। Currently, New York Apes are at the top of the table. लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हर खिलाड़ी को ये याद रखना चाहिए कि जब भी मुश्किल आए तभी दैट इज द मोमेंट जब आपका असली जुनून दिखता है। हर प्लेयर में वो खास बात होती है जो उन्हें एक लेजेंड बना सकता है। सो प्लेयर्स, क्या आप रेडी हो अपने जोश और जज्बे से हर मैच में धमाका मचाने? एंड व्यूअर्स, क्या आप रेडी हो? क्योंकि आज भी हमारे साथ होंगे अनप्रेडिक्टेबल टर्न्स, थ्रिलिंग मोमेंट्स एंड क्रिकेटिंग ब्रिलियंस। दिस इज GEPL एंड द गेम इज ऑन। Hello and welcome to JetSynthesys presents the Global E-Cricket Premier League. Of course, the finest aspects of cricket, gaming, esport and entertainment coming together. We had an enthralling 5 matches for day 1. You're watching us on JioCinema. Here we are, match day 2 and the first game for the day. Joining me along is our expert Chetan Narula. Chetan, great day of cricket, E-Cricket, first day? Absolutely, Roshan. Thank you so much for that introduction. Yes, you know, this is combination of passion, technology, and a lot of cricketing action. This is the Global E-Cricket Premier League. Well, of course, just to remind all our viewers of what the format looks like, in case you're wondering of all the games yesterday. The format, of course, remember we started with our registrations and around lakhs of them entered the foray? Absolutely, lakhs and lakhs of players. हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा क्वालिफायर्स आए थे, जिसमें से हमने GEPL क्वालिफायर्स में चैलेंजर मोड के द्वारा 48 बेस्ट प्लेयर्स सेलेक्ट किए। उन्होंने वर्कशॉप में हिस्सा लिया यहीं पुणे में 13 से 15 अक्टूबर, और अब जो है क्लोज्ड लीग चल रहा है। दिस इज अ राउंड रॉबिन लीग स्टेज। जो 48 बेस्ट प्लेयर्स हैं वो हमारी 8 टीमों में बट चुके हैं, 8 टीमों में बट चुके हैं, एंड दे are playing for the big finale. The top 4 sides will be in the knockouts, and those top 4 will vie for a cash prize of 2.51 crores.
2.51, that's massive. Now, of course, remember, there are 8 teams who are applying the trade out here for the start in Pune. Battling it out, you have teams like Chennai, you have Mumbai, Kolkata, you have also London and Dubai, also Sydney Panthers there who are going to battle it out. Remember, we are going forward to a qualifier and eventually an eliminator, which will bring the top 2 to the land finale. एब्सोल्युटली जैसे भी किसी भी तरीके की प्रीमियर लीग होती है वहाँ पे आपका एक क्वालिफायर होता है एलिमिनेटर होता है सेकंड क्वालिफायर होता है और फाइनल होता है सो द टॉप 4 sides will be playing that same qualifying round. These are the 8 sides vying for that trophy as well as that cash prize. Well, 8 game, of course, the 8 teams played each other yesterday and they know about their strengths and weaknesses. But let's head to today's game, which we have in our hand. There you are, of course, Sydney Panthers taking on London Rhinos today. Remember, both of these teams come after a loss. I'm pretty sure they want the victory right now. You know, the format of the league is as such. You know, on 10 days, we are going to have 5 matches. On the 11th day, we are going to have 6 matches. You know what it does? It gives you opportunity. Yesterday, it was the opportunity of Chennai and New York to win 2 games in one day and go to the top of the table. That opportunity today is with London and with Mumbai. And yes, लंदन और मुंबई कल अपने पहले मैचेस हारे थे तो आज दोनों मैचेस जीतो और टेबल को बिल्कुल पलट दो आज वो दिन है Well, of course, the tabletop was yesterday were toppled. It was Chennaiwolves were leading, but eventually New York Apes really showing what grit they're made up of. And you talk about today's game. There you have London Rhinos taking on Sydney Panthers, of course, in their second game today. And I'm pretty sure they would want the 2 points coming right now. Yeah, I mean, let's talk about these two sides. Sydney Panthers, पहला मुकाबला हारे अपना चेन्नई वुल्व्स से इनॉग्रल मुकाबला था पहला ही मुकाबला था चेन्नई वुल्व्स की बॉलिंग थोड़ी स्ट्रांग है सिडनी गॉट अ ग्रेट स्टार्ट बट कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन इट और जहां तक हम लंदन राइनोस की बात करें दे लॉस्ट देयर फर्स्ट गेम टू दुबई वाइपर्स सो you know like we said you know it's a fresh day a new start and London you know they'll be happy they're playing 2 games today they can totally turn around their fortunes in the points table today so yeah I mean let's look at who the players are. Of course, we go forward. Remember, Pradyumna has had an impressive start to the campaign. 31 yesterday, one of the top scorers in the league already in that leaderboard of runs. Also, he's been supported by Azan and Akshu as well, isn't it? Absolutely. And, you know, Pradyumna, he was very impressive. He's got those 31 runs under his belt just from the one game. So today, again, you know, he's the brute player. We have to explain it to our viewers again. You know, there are 4 categories of players, the brute players, the radical players, the balanced players, and the defensive players. So the brute player has a lot of power, has a lot of timing, but his margin of error is also a little reduced. The radical players, you know, they are attackers and they are defenders. They just take stock of the situation. Situation के हिसाब से खेलना आता है हमारे radical players को. Similarly for the balanced players, and then there are the defensive players. So this guy is a brute player, and he is going to be an important player for Sydney. Apologies, sir. Well, we move on to the next segment where, of course, we're watching London Rhinos there. Chetan, London Rhinos have an opportunity with redemption and you know there are a couple of players who are very very important for them you know you look at their side the top 4 players Tejas Supreet Praveen and Shivam in सबका strike rate 200 के ऊपर है and then you have somebody like an Amit you know he has again a strike rate over 200 but then his bowling as well इनका economy rate जो है वो 5 के अंडर है less than 5 runs and over that is a great all-round player that's Amit you know you have to remember his name and then you know you also talk about a few other players like Ratikanta Sahu is he in the team today I'm not sure but yeah he is an AB de Villiers fan but you know these players strike rate above 200 economy under 5 it's a great combination for a matchup. Well, of course, we're talking about the important partnerships which has helped these 2 teams. Now, again, partnerships have been so instrumental. Now, you, of course, are your players, of course, to watch out for in that match that you're going to have. Onus on them? Absolutely. You know, players to watch out for means these are the players जो आपके 5 ओवर के मुकाबले में आपको घमासान करके देंगे. You know, they're going to deliver the knockout punch and Praveen is an important player for the London Rhinos. A strike rate in excess of 233. You know, a lot of matches have been won on a higher strike rate. Right. जब आप कल हमने देखा क्या देखा day 1 पे कि teams are bowling first after winning the toss and changing the game in the last 2 overs. So chasing is important and you have somebody like Praveen who can strike at 200, so that becomes really, really important. Well, of course, but also don't forget that the contribution of bowlers has been massive. Now, of course, it was an understatement yesterday when we were speaking about the bowlers also making an impact. We've seen so many bowlers do that.
Oh, absolutely. And we're talking about the patterns which emerged on day one. The first pattern was, you win the toss and you bowl first. The second pattern was that in the first 2 overs, which is the power play, तो हम अपने viewers को बता दें कि पहले 5 ओवर में से 2 ओवर जो हैं वो power play की तरह यूज होंगे, जिसमें आपके केवल 2 फील्डर्स बाहर होंगे. The usual rules apply from real cricket, real life cricket to real cricket on the mobile platform that we have at the GEPL. लेकिन उन 2 power play overs में लेफ्ट आर्म स्पिन बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हुआ है, और जो लास्ट का 4th and 5th ओवर जो है उसमें पेस का इस्तेमाल हुआ है. सो लेट्स सी इफ दैट कंटिन्यूज टुडे. चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है इस मुकाबले में, बिकॉज वी आर ऑल रेडी फॉर द टॉस राइट नाउ विद नीरज इज देयर विद द अंपायर्स एंड द कैप्टन्स. लेट्स गो फॉर द टॉस. Hey, I was just on lenskart. ये जो price है $999, right? नहीं करण, रुपीज है. I can't be seen wearing glasses under 1 lakh. Price थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्या? करण, ये बढ़िया प्राइस है. It's only because we don't have middlemen. 90,000? आप कहीं और से ले लो. 80,000. I'm going. Bye. अमीरों की हाई लगेगी तुझे. फैक्ट्री वाले प्राइसेस, नो मिडलमैन. lenskart, डाउनलोड द ऐप. लेकिन ये पाइप चलेगा. finolex पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. Welcome, ladies and gentlemen. Today is day 2, match 1. We've got 2 very strong teams and both are looking for their first win. हमारे साथ है Sydney Panthers से अक्षत कोंडाल and London Rhinos से सुखप्रीत सिंह. A big round of applause. I would now request the umpire to come on stage for the toss. कैप्टन, आप में से कौन कॉल लेगा? आप. London Rhinos have called for head. Let's see. And heads it is. We will bowl first. You will bowl. Oh, great. So, यहाँ ये बताइए कि why did you choose that? सर टारगेट का पता हो तो थोड़ा इजी रहता है. अच्छा. चेस करना, प्लान अकॉर्डिंगली. ओके. एंड डे 1 से क्या लर्निंग्स है आज के लिए? कल थोड़ा 1-2 जो हुई है मिस्टेक्स उसको सुधारेंगे, जो आज जीतेंगे ट्राई करेंगे. ठीक है, तो बॉलिंग फर्स्ट. हाँ जी. चलो, ग्रेट. ऑल द बेस्ट. अक्षत, बताइए यार, दर्शकों को बताइए. यस, कैसा लग रहा है आज आप बैटिंग करेंगे? क्या लग रहा है? व्हाट्स द स्ट्रैटेजी टुडे? ट्राई करेंगे स्कोर बनाए ज़्यादा से ज़्यादा. बाकी अगर टॉस जीते तो हमारा बॉलिंग लेने का ही था. अच्छा. एंड एनी लर्निंग्स फ्रॉम डे 1? यस, मिडल ओवर्स में थोड़ा फंबल हो गया था कल, बट आज ट्राई करेंगे ना हो. ग्रेट. ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. So guys, now we know London Rhinos have won the toss and they have decided to bowl. Over and out to my analyst. Well, the news from the center being that the London Rhinos have won the toss and have chose to bowl. Again, we are seeing that trend pretty common now. Putting the opponent to bat and then eventually getting out to chase. जी रोशन, और हम ये देख रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म में जितना छोटा फॉर्मेट होता जा रहा है उतना ही जो है टीम्स जो है दे वांट दैट टारगेट इन फ्रंट ऑफ देम. ये एक आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं रियल लाइफ से. हम देखते हैं जो रियल लाइफ क्रिकेट है उसमें भी T20 फॉर्मेट हो या ODI फॉर्मेट हो, टीम्स लाइक टू चेज, दे वांट द टारगेट इन फ्रंट ऑफ देम. हम अपने दर्शकों को बता दें कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हो रहा है ये मुकाबला. दैट्स गोइंग टू बी द कॉमन थीम for all matches in this tournament. It's going to be the same conditions for all teams. Good batting conditions, good bowling conditions as well. तो देखना होगा कि किस तरीके से जो bowling side है बैटिंग साइड पे प्रेशर बनाती है. And of course, before we head into the game, quick prediction, who do you think will come out? London Rhinos, I think they have a good bowling side. I'm looking at a couple of their players with the economy under 5. I'm backing the London Rhinos. There it is. London Rhinos has the backing of the analyst here, of course, but we're all ready for the game where our casters Floki and of course Crips are ready with the first game.
कुछ भी हो सकता है। जो खुद की सुनते हैं दुनिया उनकी सुनती है। lenskart आकड़ है। लेकिन ये पाइप चलेगा। finolex pipes पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। Indeed, thank you so much for the warm throw, Mr. Roshan. But, ladies and gentlemen, GEPL Season 2, or excuse me, Day 2 is upon us. Not Season 2 just yet. This is the second day of, well, the set of matches that we have, the round robin stage. And I have to say, the Sydney Panthers didn't really have the best of showings yesterday against the Wolves. The Chennaiwolves did manage to best them in that first match. Unfortunately, the Wolves themselves lost their second match against the Apes. But perhaps the Sydney Panthers learned a thing or two from the Apes and are going to implement it in this one. I really hope that they have indeed learned whatever they required to learn. I could say that even London Rhinos had a similar story, right? They were doing really well, especially when they were playing against Dubai Vipers. They would often bowl in such a way where they would limit their opponents to 1 or 2 runs per bowl, but then they became readable towards the tail end of their overs. Like almost every time you thought that, yeah, this over is going to be great, it ends in a boundary. So that happened a lot with London as well. Certainly, and here we are straight into the game. It is going to be Azan batting it out for the side of the Panthers, trying to set a nice and high target. We'll see what he can do right away. It looks like we might be in for the boundary, or is the fielder going to get to the ball? Looks like he does manage to stop it, but that is going to be 3 for the side of the Panthers. A strong opening in the power play. Yeah, could have been a boundary. आराम से 4 जा सकता था ये, बहुत अच्छा शॉट सिलेक्शन था और इनफैक्ट उन्होंने फील्ड भी बहुत अच्छे से परखी। इस पावर प्ले का पूरा फायदा उठा रहे हैं। भले ही बाउंड्री मिली नहीं, लेकिन 4 रन विकेट के बीच में भाग के ले लिए उनने। Oh wow, again, beautiful shot coming through, and that's going to be a boundary. A pulse out and it's 125 showstopper trips. And that is the kind of start the Panthers are looking for after a rough day 1. Exactly, Panthers did not really have the best of starts yesterday. 4 runs in the first 2 balls each. One by running between the wickets, the other one by boundary, and then another third boundary to follow it up. This is what I call a damn good start. Yeah, I did not know Panthers have wings, but it certainly seems like they're off to a flying start today, as the Sydney Panthers and Azan in particular have really picked up the pace. As I don't think they're too happy with yesterday's result, and that's going to be another boundary coming through. This man cannot be stopped. They found 4 runs by running it out on the very first ball itself. And the Sydney Panthers, man, they are off to a brilliant start. I think they have already redeemed themselves for yesterday. आजान तो चौके पे चौके मारा जा रहा है और ऐसा भी नहीं है कि एक शॉट रिपीट कर रहे हैं वो। नोप, एक बार पॉइंट की तरफ, एक बार स्क्वायर लेग, मिड विकेट, हर जगह पे उन्होंने अपना दबदबा बनाया रखा है। आजान अगर इस तरह से खेलते रहे तो शायद वो एक परफेक्ट ओवर खेल सकते हैं, परफेक्टली फुल ऑफ बाउंड्रीज। और यार अमित का चेहरा देख के तो मुझे खुद को दुख हो रहा है अभी। Yeah, I think अमित अपनी गेंदबाजी से ज़्यादा खुश नहीं होंगे, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये पावर प्ले है, फुल टॉस। नो, नेवर माइंड। हमारे ढोलबाज काफी ईगर थे और उसी के साथ आउट शायद। और यस, अंपायर ग्राउंड करते हुए वो एक आउट है। जैसा ही लेंसकार्ट ने कहा, नजर हटी और दुर्घटना घटी। बहुत ही शानदार फोर्स के बाद सिडनी पैंथर अपना पहला बल्लेबाज खो बैठेंगे एक रन आउट की वजह से। और वो जो ब्रूट बैट्समैन प्रद्युमन आई थिंक आउट हो चुके। ओह नेवर माइंड, प्रद्युमन नहीं आउट हुए, अजान यहाँ पे आउट हुए हैं। या ही वेंट फॉर अ डबल एक्चुअली। वो सिंगल रन से शायद अपनी स्ट्राइक रिटेन करना नहीं चाहते थे। ही वांटेड टू गेट इट बैक इन, बिकॉज़ ऑफ दैट वो बाहर गए। नाउ ये रन आउट के कारण उनका जो मोमेंटम था वो डेफिनेटली पूरा रूइन हो जाएगा। आजान जिस तरह से मार रहे थे और जिस तरह से यहाँ पे फील्डिंग हो रही है, वो दोनों देख के मुझे बुरा लग रहा है। या आई थिंक काफी सारी मुश्किलें यहाँ पे खड़ी हो गई थी। आई मीन बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो आखिरी बॉल। मैंने आखिरी गेंद कम से कम 2 बार फील्डर्स के हाथ चेंज करते हुए देखी, लेकिन उसी के साथ पहला ओवर समाप्त होता है पावर प्ले का। आई थिंक सिडनी पैंथर्स ने काफी अच्छा स्कोर बनाया है पहली ओवर में, लेकिन शायद वो विकेट खो बैठना उन्हें हजम नहीं होगा इतनी आसानी से। कोई बात नहीं यार, उनका 19 का रन रेट है। अगर ये 15 के ऊपर भी रन रेट को रखते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा गेम हो जाएगा इनके लिए। फिर चाहे वो विकेट्स खोए तो खोए, उनके हर एक बैट्समैन इस तरह से मारने के काबिल है। इवन द बैलेंस बैट्समैन आर वेरी स्मार्ट, जो कि एंड में आएंगे। हाँ, और इसी के साथ सागर अंजुम जो लेग स्पिनर है यहाँ पे गेंद पे रहेंगे, और उसी के साथ ये शॉट नहीं जाएगा बाउंड्री की तरफ। फील्डर पकड़े जाएंगे और वापस से
देख रहा हूँ कि सिडनी पैंथर्स काफी जुनून में है रन बनाने के लिए। डेफिनेटली शॉट्स उनके बहुत सारे पावरफुल वाले लग रहे हैं, लेकिन हमेशा बाउंड्री मिल नहीं रही है। एटलीस्ट स्टार्टिंग में जो स्ट्रीक मिली थी बाउंड्रीज की, उसके बाद तो थोड़ा ऐसा लग रहा है हल्का हो गया अभी। बिल्कुल, आई थिंक सिडनी पैंथर्स भी थोड़ा आराम से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो ज्यादा विकेट्स ना खोए, और जैसे ही मैं वो कहता हूँ वो काफी बुरी तरीके से जा सकता था पैंथर्स के लिए, लेकिन हाँ एटलीस्ट आउट नहीं हुआ, बैट को भी टच नहीं हुआ, नहीं तो विकेट कीपर पकड़ सकते थे उन्हें। ऐसे बॉल्स जब ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं तो ये ट्रैप सेट करने के लिए रहते हैं। एक बार फिर से बॉल उसी डायरेक्शन में गया, लेकिन इस बार उन्होंने मिड विकेट की तरफ मारा है बॉल को बहुत ही अच्छी तरीके से। He did not go for the cover drive like last time. Last time cover drive करने गए तो मिस हो गया वो शॉट। बिल्कुल, बहुत ही शानदार शॉट मिड विकेट की तरफ, और उसी के साथ आई थिंक ये प्रद्युमन का पहला चौका है। जो ब्रूट बैट्समैन है अपना जलवा दिखाते हुए। फिलहाल सागर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन शायद वो बाउंड्री भी थोड़ी भारी पड़ सकती है, लेकिन उसी के साथ ही पावर प्ले ओवर्स है, तो आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू एक्सपेक्टिंग दैट मे बी प्रद्युमन इज एबल टू गेट दोस बाउंड्रीज इन। But can you expect this in? Oh, okay, interesting ball a bit too late on the swing there by the batsman. Pradyuman missing an opportunity there, and I think Sagar's going to be quite pleased about that. Definitely. At least पिन इतना नहीं खाया, तो अगर यही सेम बॉल रिपीट होती तो इस बार ट्रेजेक्टरी पकड़ना बहुत आसान हो सकता है। और ट्रेजेक्टरी पकड़ ली, it goes for a 4. That's a buzzer, powerful shot. Once again, a beautiful 4 coming through from Pradyuman as he redeems himself for the last ball. And I have to say, the Sydney Panthers making really good use of those power play overs. Just one ball remaining now. He wants to try and knock it out of the park, but it is actually caught by the fielder, baited in by the bowler perfectly. And I don't think you could have asked for a better start if you're the Rhinos. Indeed. Sydney Panthers अब actually वो trend follow कर रहे हैं जो लंदन राइनोज ने कल follow किया था। लंदन राइनोज भी बहुत ही तेजी से रन्स तो बना रहे थे, लेकिन अपने विकेट्स भी उतनी ही तेजी से खो रहे थे, और आज सिडनी का भी वैसा ही ट्रेंड चल रहा है, वैसा ही पैटर्न चल रहा है। Seems like both the teams are learning all their bad habits. Oh yeah, I think दोनों टीम्स ने एक दूसरे को गौर से देखा है, उनका गेम प्ले रिसर्च किया है, और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि काफी चतुरता के साथ गेंदबाजी की जा रही है यहाँ पे। बाउंड्रीज भी दे रहे हैं, लेकिन विकेट्स भी ले रहे हैं पावर प्ले वाली ओवर्स में। प्रेशर बनाए रखा है बैट्समैन पर। सिडनी पैंथर्स थोड़े खुश नहीं होंगे उससे, लेकिन उसी के साथ पावर प्ले ओवर्स समाप्त हो चुकी है, तो अभी हम शायद थोड़ी अलग तरह की गेंदबाजी देखें। क्या देख लीजिए कैसे साइड्स की तरफ, स्पेशली टुवर्ड्स स्क्वायर लेग, मिड विकेट, पॉइंट एंड कवर, कितना ज़्यादा स्प्रेड है वहाँ पे फील्डर्स का, लेकिन टुवर्ड्स लॉन्ग ऑन एंड लॉन्ग ऑफ सारे प्लेयर्स विद इन द 30 यार्ड सर्कल ही है। बिल्कुल, और उसी के साथ एक और बाउंड्री पैंथर्स के लिए। ब्यूटीफुल 4 कमिंग थ्रू। बहुत ही शानदार शॉट सिलेक्शन था बाय सौरभ। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम यहाँ पे फील्डिंग सेट करोगे, चेंज करोगे, मुझे इंटरसेप्ट करने के लिए पॉइंट पे प्लेयर्स रखोगे, कोई बात नहीं, मैं मारूंगा थर्ड मैन की तरफ, इतना पीछे मारूंगा कि तुम्हारे फील्डर्स यहाँ पे पहुंच नहीं पाएंगे। बिल्कुल, थर्ड मैन और फाइन लेग काफी खुला छोड़ा है यहाँ पे लंदन राइनोज ने, और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ पे पैंथर्स, लेकिन उसी के साथ सौरभ वापस से स्ट्राइक पे आएंगे, जो उनके बैलेंस्ड बैट्समैन है, और अक्षत एक अकेले रैडिकल बैट्समैन बाकी है। काफी अच्छा शॉट बॉल था, जिस तरह से उन्होंने कट मारा, इट वाज क्वाइट सेफ, काफी ग्राउंडेड शॉट था, तो कैच आउट होने का तो रिस्क है नहीं, बट क्या यहाँ पे रन आउट मिलेगा? नहीं, नेवर माइंड, ही गिव्स द बाउंसर वार्निंग। That's going to be the one for the over, but still 3 balls remaining for Shivam. Let's see if he can try and get another wicket, or at least bowl a few dots. Oh, rather slow. चलो at least 2 runs मिल जाएंगे। Hey, as long as these guys keep up the pace like this, काफी अच्छा रहेगा। एक बाउंड्री followed by बाकी सारे balls पे 2 runs, I think उतना काफी रहेगा सिडनी पैंथर्स के लिए। हाँ, बट वो एक बाउंड्री हर एक ओवर में आना एटलीस्ट काफी जरूरी है। I mean, even if they just score 2 on every ball, averaging it out, you know, over the course of the next few balls, they should be able to hit at least a 65 run mark. वो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। So
I think Sydney Panthers काफी comfortable है अभी. I think the number one priority should be to not lose too many wickets. We've seen way too many batsmen get eager to score those boundaries, and get baited in by the bowlers and lose those wickets. And, See, this is one of those balls जहाँ पे आप actually trap हो सकते हो. Oh, okay. Well, the batsman will be safe. The ball overthrown a little bit, but it's okay. कोई बात नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा रन बनाने का मौका नहीं मिला. मैं कह रहा था कि ऐसे ही बॉल्स पे काफी ज्यादा ट्रैप सेट होते हैं. जो भी बॉल जब फील्डर अराउंड द विकेट डालता है, स्पेशली जब वो ऑफ साइड की तरफ लैंड होती है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और आप कवर या पॉइंट की तरफ मारने की कोशिश करते हो, अगर आपने लॉफ्ट कर दिया और इतनी पावर नहीं लगी तो आप डायरेक्टली कैच आउट हो सकते हो. बिल्कुल. And again, it's going to be protected by the fielder. That ball will not be able to zip past him. The 3 runs will be conceded here by the side of the Rhinos. With that, marks the end of the third over. काफी स्टेबल प्रदर्शन है यहाँ पे सिडनी पैंथर्स की तरफ से. दे आर करंटली एट 44 for 2. 2 ओवर्स अभी भी बाकी है. अगर ये बाकी के 2 ओवर्स में 10 रन भी मिल जाते हैं एक ओवर में, तो उनका 64 का टारगेट बन जाएगा, which is decent enough. Okay. I like this new perspective. इससे हमें बॉलर की तरफ से भी देखने मिलता है. अगर आपने हर्ड पे गौर किया रहेगा, आपने देखा रहेगा कि कैसे बॉलर अपना स्पिन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, कौन सा टाइप का बॉल डालना है वो डाल सकते हैं, एंड ऑब्वियसली ही कैन कंट्रोल वेयर द बॉल विल बाउंस. तो इस बार उन्होंने शॉर्ट बॉल डाली, और ऐसे शॉर्ट बॉल्स पे उन्होंने नोटिस किया है कि सौरभ को लॉफ्ट करने में थोड़ी दिक्कतें हो रही है. बिल्कुल. आई थिंक ड्राइनोस का नंबर 1 प्रायोरिटी अभी यही है कि वो ज्यादा बाउंड्रीज ना दे, और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं उसके हिसाब से. But with that said, looks like they're going to change the field up just a little bit. In fact, put one fielder on the inside field towards third man. And with that, the Panthers will still be able to run a couple. देख लीजिए कितनी अच्छी टाइमिंग है इनकी. कवर ड्राइव्स एक्चुअली इनकी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन बिकॉज ये मेलबर्न है, यहाँ पे स्टेडियम का जो फील्ड साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. फोर्स मारना इतना आसान नहीं है यहाँ पे. We still haven't seen Saurabh try any shots towards long on or long off, and I don't think we will need to, क्योंकि वो square leg की तरफ भी काफ़ी अच्छे से ही मार रहे हैं. A lot of these shots are towards the side of either side of these players, right? सामने कोई नहीं मार रहा. Yeah, certainly. They trying to hit it towards the off in the leg, not really trying to drive the ball straight, and there's a good reason for that. It's because I think one of them is a balanced batsman, so they don't necessarily have the power to launch the ball all the way across the boundary. So instead, they're just trying to play it safe, get all the 2s and 3s they can, instead ride the momentum of the batsmen from the power play overs, who did really well. That first over was fantastic for the Panthers, even though they lost a wicket. हाँ चलेगा यार. आजान ने 4 चौके मार दिए. I mean, एक तो चौका था भी नहीं. One of them was just him running 4 times between the wickets. And once you get that kind of a momentum, I think it's amazing. And that's why we need to really appreciate these opening batsmen. वो अपने बाकी की टीम के लिए काम बहुत आसान कर देते हैं. Oh, this one might be close. Nope, never mind. The batsman was safe. It's just going to be a 1, so... And they will get the bounce warning. This is the final ball of the over. Praveen, if he wants to try and play with the minds of the batsmen, now is the chance. As it is Akshu, who's this is going to be his second ball in the entire innings, and there it is, a swing and a miss. Yeah, Akshu didn't really get the chance to show off his talent yet. Yet being the keyword, there's still a couple overs left. Actually, no, there's only 1 over left, so if there's anything he has to show us, it has to be now. सिडनी पैंथर्स के पास काफी सारे विकेट्स पड़े हैं, तो अगर उनको रिस्की खेलना है तो अभी वो डेफिनेटली खेल सकते हैं. They still have a radical batsman left जिनको वो फील्ड पे उतार सकते हैं. Oh, that one's high up in the air. Is it going to be caught? Yes, it is. And there it is, the celebration coming through. The London Rhinos will find their 3rd wicket of this innings, and it's never too late for that. Even at just 53 runs, that is them creating a ton of pressure here on the side of the Panthers, who were hoping to clear 60, but with that wicket in hand, I think it's certainly going to be difficult for the Panthers to now achieve that. सुप्रीत को थोड़ा अपनी स्टाइल एडजस्ट करनी पड़ेगी. जब उन्होंने विकेट निकाला तब वो एक राइट हैंडेड बैट्समैन था, ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है. And Supreet is the medium fast pace bowler for the side of the Rhinos. Just so you know. Oh, that is completely left by the batsman.
And that's a wide, I believe. Yeah. One free run, no problem. Still target 54 का ही है. As long as Sukhpreet ऐसे pressure बनाते रहे, wickets लेते रहे, dot balls लेते रहे, I think he's going to be quite happy with this performance. लंदन को 60 से कम के टारगेट देने के लिए उनने ये पूरी कोशिश की है. बहुत ही अच्छे बॉल्स हर बार अलग डायरेक्शन में डाल रहे हैं. Never on the stumps, but एक बार towards off side, एक बार leg side पे. और यहाँ पे अक्षु बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहे. This is the first time कोई ऐसा एक बैट्समैन उतरा है जिनने ज्यादा डिलीवरी फेस की है लेकिन उतने रन्स नहीं बनाए हैं. Yeah, and I think there's a good reason for that. Although, hold on to that thought. No, it's not going to be caught. It bounces once and that is enough to keep the Panthers safe. As I don't think that's an out, even though it hit the stumps. It was a bit too late. But yeah, Akshu really hasn't had a chance to face that many balls, so it's quite understandable why he's not really able to connect on some of these shots. He hasn't been accustomed to it. And now that, you know, with just 5 balls and he's going into the last over, of course he's going to feel the pressure. Speaking of which, again, no boundary given, but they will still find the twos consistently. You could hear that chip as it went towards the cover side. It was a nice cover drive, लेकिन I think ball जो है ना वो बैट के हल्के से edge पे लगा. Center में लगा तो ये boundary हो सकता था. Power अच्छी थी, timing अच्छा था. Oh yeah. But yeah, batsman position was a little too close to the impact point. And they even changed the fielding position for the final ball, so yeah. Looks like Sukhpreet is going to try to mess with Akshu's head, but let's see if Akshu keeps his cool. Well, that's a beautiful shot, and it finds the boundary, and that's what they were looking for. The Panthers will be able to get 62 runs in the first inning, setting a target for 63 for the side of the Rhinos. That's still a good over. उनने सिर्फ 8 रन दिए आखिरी ओवर में. It is much better than what I expected. So far, कोई भी टीम 65 के ऊपर नहीं जा पाई है. All new Pulsar Manias here. Maniacs wanted. lenskart. Download the app or visit your nearest store. लेकिन ये पाइप चलेगा. Finolex pipes. पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. We are yet to see a team cross the 70 mark, and I guess इस वाले मैच में तो नहीं देखने मिलेगा. I mean, I think we actually curse it every single time we call it out as the casters. Yeah, I think we should just relax. हम लोग को, you know, शांति से बैठना चाहिए, and 70 will come. You know, we have 14 days, 13 days of action remaining. I'm sure we're going to find that some point or another. एक ना एक बार तो आएगा. बिल्कुल, आना चाहिए. Yes, let's make a pact. You and I are not going to mention that ever again, and hopefully, if the real cricket gods are watching, they will grant it to us. But oh boy, the London Rhinos leave nothing to chance as they find the boundary right away on the very first ball, much like the Panthers. Pulsar, powerful shot. ये मैच में ट्रेंड रहा है. स्टार्टिंग के बॉल्स पे हमेशा एक चौका तो जाता ही है. Whether it's running between the wickets or whether it's by sending it across the boundary. Both the innings of this match started with a 4. Oh yeah. As it's going to be Chetan who's doing the bowling. Just to fill you in, he is the off spinner for the side of the Panthers. Yeah. There's a lot of teams preferring to bring out their spinners for the power play overs, hoping to catch the batsman off guard. But will this find the boundary or is it going to be protected by the fielder? No, the fielder does not reach the ball in time, and that is another boundary. As the Panthers getting a taste of their own medicine, nice and early. बैट के टॉप एज पे लगा था ये. फाइन लेग की तरफ गया बॉल. सॉरी, फाइन लेग में नहीं. Since he's a left-handed batsman, this becomes third man. Oh yeah. And even though there's a fielder position towards point, वो fielder वहाँ पे टाइम पे पहुँच नहीं पाएंगे. इसलिए इन्हें एक slip भी डाला है इस बार. Let's see if that slip can get the catch. Oh no, never mind. But it will not find the boundary. Regardless, though, again, a really strong start here for the side of the Rhinos. As I do believe yesterday, the game against the Vipers just slipped past their hands, just barely. The Vipers, played a very close match, and the Rhinos have learned their lesson.
And somehow, Praveen has found another 4, making it this tournament's 59th. Wow, these guys are really smashing these across the boundaries, right? I mean, we're only, what, 6 matches in? Yeah. And there's already been 59 boundaries. Yeah, we're 50 overs in, by the way, overall, across all matches. And we have 59, 4s already. That's kind of an insane stat to think about. But looks like they're not really going to find a boundary. In fact, I believe they just found 1 run off of that. So yeah, it's still okay. Finally, a strike change. Here comes Tejas. They are opening with their brute and their radical batsmen. So both of these guys have an insane amount of responsibility on their shoulders. Carry करना पड़ेगा टीम को starting के 2 ओवर में. Oh yeah. Oh, और ये बॉल हवा में है, बाउंड्री के पार जाएगी. पहला ओवर समाप्त होता है एक छक्के के साथ. Powerful shot. That's what happens जब आपकी बॉल full length की तरफ जाती है. बैट के एकदम lower end पे लगा, giving you insane amounts of power in that loft. Oh yeah. And that will conclude the first over. Tejas अपनी पहली बॉल पे छक्का मारते हुए काफी खुश होंगे. I know, right? What a way to start. एक ओवर में 21 runs. लंदन राइनोस ने बहुत ही तेज शुरुआत की है. And they continue to take these risky shots. ज्योति प्रकाश अभी bowling कर रहे हैं off by quite a margin, so the umpire will grant the wide. Yeah, वो spin भी जिस तरह से उन्होंने डाला था वो good length का spin था. That's why even though it spun towards the wicket, it's still a wide. Okay. Well, I believe the inside fielder should be able to get that, and that's going to prevent them from getting that second run in. Good fielding coming through from JP, Jyoti Prakash, making sure that members of the Rhinos only find morsels at least in the first few balls. If you count the wide. Oh. But this time around, the ball has been smashed. I think the fielder will be able to prevent that. Good fielding coming through. And looks like they will still be able to find 3. Yeah, but what a shot was that? Oh, that yeah. was somewhere between like a stroke and a loft. It went the distance. No, अच्छा कैसा गया है यार. Cover की तरफ बहुत तेजी से मारा था. I'm actually surprised that the fielder managed to stop it in time. Yeah. I think the London Rhinos are going to be quite pleased with their current run rate. I think if they just keep going, they're going to be able to chase and find the target rather easily. And the bowlers from the side of the Sydney Panthers yet to apply any significant pressure. No real wickets taken. The batsmen starting to get comfortable, getting acclimatized. There's still 3 balls to go, but yeah, you need more of that, a lot more of that, where you came from if you're the Panthers. Yeah, बहुत सारे dot balls की requirement है यहाँ पे. JP, he is one of their stronger bowlers. Oh, man, these balls are getting a little too dangerous यार. एक तो यहाँ पे उन्होंने 0 दे दिया था. ये वाला almost catch out हुआ. अगर बॉल हल्का सा भी टच होता बैट को, that wicket keeper would have had a wicket. Oh yeah. I mean, काफी अच्छी bowling कर रहे हैं यहाँ पे ज्योति प्रकाश, और इसी के साथ जो विकेट की जरूरत थी वो ही विकेट मिलेगी. प्रवीण आउट हो चुके हैं. यार प्रवीण, ये बहुत ही ज्यादा उन्हें नजर हटा दी अपने टारगेट से. दुर्घटना तो घटनी ही थी. Oh yeah. बहुत सारे रिस्की शॉट्स अटेम्प्ट कर रहे थे वो. इनफैक्ट जिस तरह की भी बॉल यहाँ पे उन्हें डाली थी, all of them were going towards the outside of the off stump edge, और काफी ज्यादा हाइट पे आ रही थी वो, even though those balls weren't short. ऐसी बॉल्स डेफिनेटली ट्रैप होती है, और अगर आप 2 बार ऐसी बॉल्स मिस कर चुके हो, तीसरी बार जब आप कनेक्ट करोगे आप डेफिनेटली कैच आउट होगे. प्रवीण, I think he got a little too greedy over there. Yeah. And again, the bowler playing Praveen like a fiddle. Because that first ball was wide, actually lulling the batsman into the false sense of security. But perhaps this time around, that ball will not be caught by the fielder because it's across the boundary, and that's a 6. Powerful pulsar shot. आसान एक ऐसे बॉलर है जो बहुत अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं. जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो वो बहुत ही रिस्की तरीके से करते हैं. इसलिए अगर तेजस कॉन्फिडेंटली खेलेंगे तो शायद वो रिस्क लेंगे. और that's what happens when you get risky. Sweep करने की कोशिश, but he got stuck somewhere in between the sweep and the scoop, and yeah, look at that awkward movement. उनके पैरों के बीच से गई है गेंद.
Oh man, I don't think बैट्समैन के बारे में खुश होंगे. London Rhinos उन्होंने just थोड़ा सा momentum वापस अपने ओर किया था, लेकिन उसी के साथ अजान एक विकेट लेंगे और अभी लंदन राइनोस को काफी संभल के खेलना पड़ेगा. शिवम और सुखप्रीत है हमारे बल्लेबाज ड्यूओ. और ये क्लोज हो सकता है. नहीं, सेफ. द डाइव प्रोटेक्ट्स हिम. आजान की स्पिन भी नहीं, ये वाला तो स्विंग डाला उनने. बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर रहे हैं वो. ये स्विंग बहुत ही डेंजरस थी. रिस्ट फ्लिक वाला शॉट मार के उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ तो बॉल उड़ाया, लेकिन ये देखिए इस बार बॉल की ट्रेजेक्टरी बहुत ही अलग. पिछली बार लेग स्टंप से उन्होंने आउटस्विंग डाला था, इस बार बहुत ही अलग डाला है. बिल्कुल. एंड ही इज फोर्सिंग शिवम टू बी ऑन हिज टोज. वो कभी कंफर्टेबल हो ही नहीं पा रहे हैं. Well, if that's what the Panthers continue to do, then I think the Rhinos will be hard pressed to cover the last couple of runs. You can see, yeah, the pressure starting to get to them. Well, that's the one bouncer. And now Azan with his 5th variation. वो क्या-क्या नहीं डाल चुके. He started with a spin, then a normal simple ball, फिर एक in-swing था या out-swing था? I don't know what one it was, but it was dangerous. Yeah. Nazan says, well, I will continue to live riskily, but you know, it pays off. Again, the scoreboard brought to you by Dhruv International School. Excuse me, Dhruv Global School. And that's going to be the 4th over of the second innings. And oh, that's a loud appeal, and I think it is given. That's a clean LBW. As the Panthers will find the 3rd wicket, and you can see the smiles breaking out on their faces. Such a successful over by Azan. Oh yeah. My God, सुखप्रीत बेचारे तो अभी जस्ट स्ट्राइक पे आए थे. डक आउट हो गए वो. उनके पहले ही डिलीवरी पे LBW. Azan, he is dangerous. एक प्लेयर को LBW, दूसरे प्लेयर को सीधा nutmeg. He's targeting the batsman's legs. It's not even a cricket term. I mean, exactly. It's you're so bringing funny. football in as well. Yep. 25 runs needed in 11 balls, and it's going to be a little hard to achieve. But nonetheless, it's going to be doable. You need to get used to the bowlers, though. Akshu has already taken a wicket, so the pressure is mounting, but you don't have any time for that if you're looking to win as the Rhinos. And the Rhinos, well, you'll see just what they can do. It is Akshat who's doing the bowling. There is a good stroke coming through from the batsman. And Sagar will be able to find 3 on the back of that. अक्षत यहाँ पे कुछ तो षड्यंत्र रच रहे हैं. सिडनी पैंथर्स देख लीजिए, उन्होंने 2 प्लेयर्स स्लिप पे लगाए हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट द विकेट कीपर. विकेट कीपर भी जो है वो थोड़ा दूर की तरफ खेल रहे हैं. Yeah. I think he's gonna try to go for a fast ball and hope that the batsman nicks it ताकि वो fielders जो है स्लिप वाले वो उन्हें पकड़ पाए. Oh, that second one might have been risky, but no, the ball is overthrown, so it looks like they will be safe here. And again, they didn't really find the 3, they found the 2 in the second ball, excuse me. So again, the pressure starting to get to the Rhinos, but the Rhinos can still stand and deliver. They just need to try and continue to get these 2s in. Good catch, good catch. Almost एक inside out field है. If it wasn't for the extra slip over there, this could have been one. And I think this is the first time London Rhinos से किसी भी एक player ने long on या long off की तरफ shot मारने की कोशिश की. अब तक उनने सामने का field तो explore ही नहीं किया है ये team ने. Yeah, and I like the fact that the Rhinos are not really trying too hard for the boundaries, instead just getting those 2s in. There'll be plenty of time to get those runs, especially when the ball is misfielded like that. They're going for a 4. No. Are they going to find the wicket? Yes, they are. And that is going to be the Rhinos getting a bit too greedy, biting off a bit more than they can chew. A misfield turns into an opportunity as well. The Rhinos said, no, we will adopt your misfortune instead. I don't know if that was a deliberate misthrow. I mean, अगर लंदन राइनोज ऐसा ही करते रहे तो ये बहुत ही स्मार्ट टैक्टिक बन सकता है. यू नो, जानबूझ के ओवरथ्रो कर दो, let the other team get a little greedy and then उन्हें run out करो. It sounds very silly. I know I sound stupid when I say this, but hey, it works. I mean, hey, if it works, it's not silly. That's the motto. But with that said, I mean, the Rhinos, they just need to guard their wickets well and be patient. The time will come. There will be a bowl
or that you can try and send across the boundary. Fast bowler, Saurabh. For the final over, that too. Yep. And this time there will be nothing left to chance. Fast bowlers को आप sweep या ऐसा कोई cover drive की तरफ इतना easily नहीं मार पाओगे. So they can adjust their field also accordingly, right? I guess. Oh yeah. And a 6 would be a huge sigh of relief here for the batsmen, for the London Rhinos. अमित आ चुके हैं strike पे. उनका पहला बॉल, सौरभ का भी पहला बॉल. देखते हैं how these first timers attempt this thing, and ये नहीं कर सकते आप. Scoops, sweeps, reverse sweeps will be very difficult अगर आप एक fast bowler को face कर रहे हो. हाँ, वो अलग बात है कि अगर सौरभ ने इतनी speed नहीं पकड़ी, उनका जो speed meter है वो थोड़ा नीचे रहेगा. Oh, is that going to be a catch? Yes, it is. And that is going to be the 5th wicket and the end of the match as the Sydney Panthers claim the first game. The London Rhinos never really stood a chance, and I think everybody's prediction falling flat on its face. London Rhinos got a little too greedy over there with their runs. They tried to go for very, very risky shots. एक player run out उसी के चक्कर में, especially during the overthrow. एक और player 2 balls miss करने के बाद एक बार फिर से cover drive वही direction मारने की कोशिश की, and he fell right into that trap. Oh yeah, and you can see the side of the Panthers are quite happy, especially after their loss yesterday. But with that concludes the very first match. You can see the shaking hands with the players, and the London Rhinos, they're going to be feeling a little bit down after that one, but let's not forget they still put up a really good performance. But we'll see if they can continue this pace or if they're going to bite the dust again over the course of the next couple of days. As we cut to a short break, we'll be back very, very shortly. All new Pulsar Mania's here. Maniacs wanted. Lenskart. Download the app or visit your nearest store. लेकिन ये पाइप चलेगा. फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. अरे 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 GPL के शेर, I mean GPL के पैंथर, what a stunning performance. Captain, please come to the stage. क्या बात, इधर आइए, 1 मिनट. Tell me, Akshat, it was such a dominating performance. दिमाग में क्या चल रहा था? This was a second match. मतलब first match yesterday, not so forgiving for the team. आज आप एक नए दिन, नए उम्मीद के साथ आए. What was the strategy going in? पहले ओवर में जैसे कि रन बहुत ज़्यादा आ गए थे हमारे, तो फिर थोड़ा टेंशन तो हो गया था, बट उसके बाद हो गया कमबैक. आफ्टर पावर प्ले कमबैक हो गया इस तरीके से. Bowling सबसे strong aspect लग रहा था आज टीम का. Any particular strategic bowling को लेकर before the match जो आप टीम से like what was that? नहीं, बस एक टप्पा वगैरह बता रखा था कि ये डालते रहना है लगातार. अच्छा. अगर लगेगा तब भी डालते रहना है बस. And like from a match winning aspect, किसको आप बोलेंगे कि आपके टीम का man of the match कौन हो सकता है? अपना नाम लेने वाले क्या? नहीं. Tell me, like who do you think? अजान बोल रहा है भाई मेरा नाम ले ले. हाँ? अजान शेख. Lovely यार, lovely. अजान क्यों यार? Why would you say that? पावर प्ले के बाद क्योंकि इनके साथ ही था सब, वो एकदम फ्लो में जा रहे थे, पर अजान शेख के ओवर ने फिर हमारे को मोमेंट दे दिया. Lovely यार, lovely. Cool. Okay, congratulations bhai, and all the best for the next match. Guys, that was the first match of the day, and over and out to my analysts. All new Pulsar Mania's here. Maniacs wanted. lenskart. Download the app. लेकिन ये पाइप चलेगा. फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी,
स्पाइक नहीं। Welcome back to the post-match show. Well, the tables have turned at the GEPL because we have the first team who have defended the target successfully. Sydney Panthers winning by 13 runs in the first game. Chetan, you expected that, isn't it? कहते हैं ना, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया. आज इन्होंने पैटर्न बदल दिया है. पहले 5 मैचेस में डे 1 पे यही पैटर्न था. आप टॉस जीतिए और उसके बाद गेंदबाजी कीजिए और टारगेट जो आपके सामने है उसको चेस डाउन कर दीजिए. लेकिन आज सिडनी ने बिल्कुल उस पैटर्न को बदल दिया है. पहले बैटिंग किया, अच्छा टोटल बनाया और फिर उसको डिफेंड किया. But it's also a good example to set because, there's also this notion that if you bat first, right, and if you chase later, you get a more victory chances. But I think that's changed now. Obviously, I think ये विक्ट्री जो है बाकी सारी टीम्स देखेंगी, उनको लगेगा कि हाँ, हम fearless क्रिकेट खेल सकते हैं. I think सिडनी की यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी. This was absolutely fearless cricket for them. आजान और प्रद्युम्ना ने बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट किया था. आजान ने चौके पे चौके पहली 4 बॉलों पे चौके लगाए थे. प्रद्युम्ना ने भी बाउंड्रीज लगाए. The start they gave that really helped them go towards 60 plus. लेकिन उसके बाद जब सौरभ ने एंड में 24 of 12 balls, a strike rate of 200, so a good start and then a good finish, जिसकी वजह से they could cross that 60 marker और प्रेशर बनाने के लिए वो 60 marker ज़रूरी था. मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि 60 ये जो स्कोर है, ये हमने देखा है कल भी डिफेंड और लोगों ने चेस भी किया है उतना, बट आज ये टोटल बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया. बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया क्योंकि अगर हम इनकी स्टार्ट देखें तो स्टार्ट वाज रियली गुड. प्रवीण ने बहुत ज़बरदस्त अच्छे स्टार्ट दिया. उन्होंने भी बाउंड्रीज लगाए, तेजस ने भी बाउंड्रीज लगाए. लेकिन उसके बाद जब विकेट गिरने शुरू हुए, यहाँ पे सिडनी की गेंदबाजी की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी. 5 ओवर्स में विकेट गिरे हैं. बॉलर्स ने, हर बॉलर ने विकेट लिया है और साथ में एक रन आउट भी आया है एक क्रूशियल मोमेंट पे, जब बाउंड्रीज की ज़रूरत थी, जब हर बॉल पे रन की ज़रूरत थी. Good performance with the bat and the ball, and that's the reason Sydney have won the game. But we've also seen both the teams, of course. I mean, right at the start, we talk about Sydney's batting there. They actually made good use of that power play, got 19 in the first overs, and eventually they tried to bring the total. Again, they were restricted to the end, but we talk about a cumulative performance. You think it's a good all-round performance for the team? Oh, absolutely. With the bat and with the ball, and here we are. You have to look at that bowling card as well. JP, 1 for 7. एक जो शुरुआती बॉलर थे, my namesake Chetan, I mean, Chetan में बात ही कुछ अलग है. He's a better bowler than I am, obviously, but still, none for 21. That was the only expensive bet. लेकिन उसके बाद आप देखिए, हर बॉलर ने उसके बाद एक विकेट ज़रूर पिक किया है, साथ में एक रन आउट भी आया है, and that's the reason, a collective all-round bowling performance from Sydney. Right, of course. Well, the Rhinos were up against it as well because in the bowling section, well, they were trying to chase with the same mindset that they probably could cut short, but it didn't turn out their way. We'll have a look at, of course, their bowling scorecard. If you look at it, 1 wicket each for Sukhpreet and Sagar, I think, but it didn't suffice. No, it didn't suffice. And the start that Sydney got, you look at the overs bowled by Shivam, by Amit, by Sagar, they gave away a lot of runs in those first 3 overs. Praveen and Sukhpreet, उन्होंने लास्ट के 2 ओवर कराए, 4th and 5th ओवर, जहाँ पे उन्होंने पेस की वेरिएशंस डाली, स्लोअर बॉल्स बहुत ज़्यादा डाले और उसकी वजह से आप देखिए उन्होंने केवल 18 रन दिए उन 2 ओवरों में. 18 रन देकर एक विकेट भी लिया, लेकिन शुरुआती 3 ओवर्स में बहुत ज़्यादा रन पड़ गए थे और उसके बाद रिकवर करना उनके लिए मुश्किल हो गया. But this also sets a very good example for all the teams who are going to play here today. Remember, we have another 4 games coming up. We'll talk about the match here today. Of course, now that we couldn't call it a jinx though, but that pattern is broken certainly. Yeah. Now teams can actually be more creative with their thinking, isn't it? Oh, absolutely. कह सकते हैं कि fearless cricket खेला है Sydney Panthers ने. They lost the toss, they were put in, but they played fearless cricket with the bat and with the ball. They put up a target they thought could be defended here. 60 को average total माना जा रहा है. I was sitting with one of the players and they were talking about how 60-65 is going to be the optimal score because a lot of individual players in one team. अगर एक ही player खेलता जो हमने लीग स्टेज में, जो क्वालिफाइंग स्टेज में देखा है, तो 70 प्लस का स्कोर बनता. लेकिन क्या यहाँ पे क्योंकि अलग अलग प्लेयर्स हैं, इसीलिए 60, 55 to 65 को एक रेंज माना गया है कि ये स्कोर रहेगा. But yeah, 62 was defendable. Well, of course, I've seen that how when these players combine together. Remember, it's a team sport now. They're not playing individually 5 wickets or the entire 5 batsmen. So that really makes a difference. We'll talk about the man of the match right in front of you. There you are, Azan. Well, I think we spoke about a good all-round performance. And of course, you've seen, Azan do that as pretty well with a 340 strike rate, remember.
what matters in the game of real cricket, I'm talking about the sport here, is that how well can you hit, and most importantly, when can you hit? So I think Azan did that pretty well. Oh, absolutely. I mean, look at that strike rate. He opened the innings for Sydney, got those runs. पहले ही ओवर में उन्होंने बाउंड्रीज लगा दी बहुत सारी, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने ओवर डाला, आई थिंक ही बोल्ड द थर्ड ओवर, ही पिक्ड अप अ विकेट एज वेल, coming in left arm, you know, he bowled those variations and everything. Absolute all-round performance, absolute worthy performance of man of the match. Well, of course, that can be debated because Pradyumna also gave a good start. I mean, of course, you're talking about a good opening pair, a good opening partnership, a combination of brute and radical, which really gave Sydney Panthers an edge. You see, 17 runs, pretty good. You may talk about 19 in the first over eventually. The fall of wickets was there, we'll agree. But at the end, what really matters is if you give a good start to your team, it ends up with a good total. And eventually, you can pressurize your opponents. Absolutely. And you look at those partnerships, 17, 12, 24. 17 and 12, while Azan and Pradyumna were at the crease. And after that, 24 between Saurabh and Akshu. I mean, from there onwards, there was no recovery for the Rhinos. And, you know, it's a disappointing one for them because now they've lost 2 on the trot. And Sydney, I mean, उन्होंने अपना पहला मुकाबला हारा था, कल उन्होंने पहला मैच ही खेला था चेन्नई के विरुद्ध, तो आज उन्होंने पहला मैच जीत लिया है. Well, जीतने की खुशी तो सभी को रहेगी यहाँ पे जो भी teams खेल रहे हैं. But you talk about the other side of the coin. You talk about how London went about. Yeah. Incredible start, 27 on board. Anybody who was witnessing this game, including me, Chetan and Akash, we thought, well, might as well London Rhinos could chase it down. Could chase it down. I mean, 60 is a par score here, but it's also a defendable score, but also considered to be a par score. And we saw that yesterday, you know, 60 was easily chased in 4 games. Not the fifth game, you know, was 50-55. Tight. But the first 4 games, 60 was chased down. So it was not really very, very different today. Praveen was a player to watch out for. So he gave a good start, but after that, good bowling performance from Sydney. You'll have to give courtesy to the bowling performance. Of course, we have the last 3 wickets falling in quick successions, which really led to that downfall of London Rhinos. Yeah, but look at, of course, how the pitch map looks like there for Sydney Panthers. You look at where the balls are bowled. Well, I think that is something which they changed from yesterday's game, isn't it? They know how they know their opponents pretty well. You know, this is against the Pacers, and you know, you look at the blue dots. That's where you maneuver the field. They've looked at it. I mean, those blue dots are more towards your spinners. आप उनको किस तरीके से maneuver करते हैं पहले 2 power play overs में. There are not a lot of hit shots. यहाँ पे काफ़ी सारे presets रहते हैं जो आप hit कर सकते हैं spin bowling को, तो वो first 2 overs में नहीं रहते हैं. उसके बाद आपने boundary balls लगाई है, not as many, but good shots. But हम देख रहे हैं कि variations के भी बहुत एक यहाँ पे उपयोग हुआ जा रहा है कि हम जब variations की बात कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं बहुत short length गेंद भी थी और वहाँ पे good length भी गेंद बहुत डाला जा रहा था. तो यहाँ पे if you see, of course, the bowling pitch map for Sydney Panthers of how it went. Yeah, you look at the red dots here. You know how they bowled. You know how they lost wickets. You know they were cramped for room, and because of that, you know those wickets they came because they were cramping for room. अगर आप लेग साइड की तरफ जाके बॉल को क्रैम्प बैट्समैन को क्रैम्प कर रहे हैं तो वो बॉल नहीं खेल पाएगा, वो शॉट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा. और रियल क्रिकेट में टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू गेट द बॉल अवे. सो वेरी वेरी इंटेलिजेंट बॉलिंग फ्रॉम सिडनी एंड यू नो दे वर एबल टू चोक द स्कोरिंग. अगर हम देखें फर्स्ट 2 ओवर्स में प्रवीण और तेजस जब तक थे तब तक बाउंड्रीज आ रही थी, उसके बाद बाउंड्रीज ड्राइड अप. But I think it's very important in playing this game. Remember, when it's 5 overs, that every single dot ball is crucial. Yeah. I mean, trying to take you to your victory if you want to, of course, that game in your hand. That's how, of course, the score looked like, isn't it? I mean, everywhere. Yeah, scoring runs all over the park. They got great start in the power play. Uske baad, they carried on in the last 2 overs. So yeah, they've scored all over the park. Good runs off the offside, which means that London didn't really bowl well. They were giving them a lot of room, or the batsmen were able to create a lot of room. So yeah, good wagon wheel to get those runs in, and they got 60 on the board, which proved defendable. Now, of course, you know, you talk about the game and how it's going to progress, how it's going to, you know, help these teams. Of course, Sydney Panthers with a loss earlier on, a win now. Of course, they're going to play eventually. What does it do to their confidence? Oh, absolutely. You know, it just takes their confidence really sky high. जैसा मैंने आपको कल बताया, day 1 पे पहला ही game हार गए चेन्नई से. उसके बाद obviously they did not get a second game that day, but today they have 2 games. The London Rhinos have 2 games, so they have a chance to come back. But Sydney, yeah, good reversal for them. And of course, we saw some fabulous 4s and 6s. Let's have a look at it. Well, the Pulsar NS 125 showstopper brings to you the 4s and 6s.
Yeah, that was a great start by Azan. उन्होंने बहुत सारे चौके लगाए शुरुआत में, प्रद्युम्न ने भी बहुत सारे runs बनाए, and Sydney were able to maneuver the field really well. उन्होंने wayward bowling अगर कह सकते हैं लंदन की. It's not easy to manufacture shots against spin in the power play, और ये हम notice कर रहे हैं. पावर प्ले में स्पिन बहुत यूज़ हो रही है क्योंकि उसके अगेंस्ट आप लॉफ्टेड शॉट्स नहीं खेल सकते हैं. ये मुझे बताया एक प्लेयर ने अभी कि आप लॉफ्टेड शॉट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने लॉफ्टेड शॉट्स इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन बहुत क्लेवरली फील्ड को यूज़ करके चौके और छक्के लगाए. सो अ लॉट ऑफ बाउंड्रीज फॉर सिडनी थ्रू आउट द इनिंग्स विच इज़ व्हाट हेल्प देम. और अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, जब लंदन की बैटिंग के हाईलाइट्स देखेंगे, तब लंदन के जो बाउंड्रीज हैं वो पहले ही 2 ओवर्स में आए थे, उसके बाद बाउंड्रीज आए नहीं. एंड और आपको दाद जरूर देनी होगी ओपनर्स की, जो आपको एक मोमेंटम सेट करके देते हैं, उसके बाद जो आने वाले बैट्समैन होते हैं, उन बैटर्स होते हैं, उन लोग के लिए बहुत आसान हो जाता है. बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं लंदन के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सिडनी ने पावर प्ले के बाद बहुत अच्छी गेंदबाजी की. उनके स्पिनर्स की थोड़ी सी पिटाई हो गई थी, खासकर जो मेरे नेम सेक हैं चेतन, उनकी अच्छे से पिटाई हुई थी. लेकिन जो कमबैक किया पावर प्ले ओवर्स के बाद, जो कमबैक किया लंदन को बिल्कुल भी बाउंड्रीज नहीं स्कोर करने दी. आप देखिए, दिस इज द फर्स्ट ओवर, इसके बाद बाउंड्रीज आई नहीं. सेकंड ओवर के बाद बाउंड्रीज नहीं आई लंदन के लिए. जी, हमने बहुत सारे ऐसे में गेम जरूर देखे जहाँ पर लास्ट के कुछ ओवरों में जी मैच का तख्ता पलट जाता है. बिल्कुल. दिस वाज वन ऑफ द गेम्स वेयर दिस हैपेंड. नाउ ऑफ कोर्स वी गो फॉर एन अंडरस्टैंडिंग देयर वर फॉल ऑफ विकेट्स ऑन बोथ एंड्स. नाउ अ फ्यू विकेट्स ऑन गुड टाइम्स रियली मैटर्स एंड कंटिन्यू द कोर्स ऑफ द गेम. विल हैव अ लुक एट द विकेट्स ब्रॉट टू यू बाय lenskart. Those are, of course, the fall of wickets, which really changed the course for the London Rhinos there. But I'm pretty sure they're going to make the mark and, of course, try to understand, go back to the drawing board, do their research and come out strong again. Yeah, I mean, London Rhinos, they lost a lot of wickets in the last 3 overs, as we just saw. वो विकेट्स नहीं गिरते. आपने कल कहा कि अभी आपने कहा कि कल जो है काफ़ी सारे मैचेस जो हैं लास्ट के ओवर्स में पलट गए थे. वो इस बार इसलिए नहीं पलट पाया क्योंकि उनके इतने सारे विकेट गिर गए. और वो प्रेशर का गेम है रियली. आपको प्रेशर में ठीक से टाइमिंग से, ठीक से पावर से रन्स लगाने हैं. मेलबर्न ग्राउंड पे ये मैच हो रहा है. 80 meters की boundary है, लगता नहीं है. So that's where the game turned today. Well, if it's your day, no boundary can be too long for you. We'll have a look at the points table of how the equation changes now. Remember, we had the New York Apes who started the campaign pretty strong yesterday, going to the top of the table, toppling the table toppers there, Chennaiwolves. We'll have a look at the points table now. Again, the equation is going to change until the entire league is going to happen. Yeah. It's becoming a very closely contested battle, which is what makes it more exciting. Yeah, I mean, there are 5 matches every day. One team or 2 teams are going to play 2 matches every day. Yesterday it was Chennai and New York who played 2 matches each. Today it's going to be London and Mumbai who are going to play 2 matches each. So they'll get a lot of, they'll get opportunities to change their fortunes around within one day. Sydney, they've got the first points on the board. They have reduced their net run rate negative margin. So now they are at 1, 2, 3, 4, 5. Number 5 in the table. And London will have another opportunity today. So they need to take that with both hands. Well, of course, that's how the equation looks like for now. But remember, we have another 4 games coming up
for today in the Global Cricket Premier League, brought to you by JetSynthesys. Exciting game lines up ahead. Delhi taking on Mumbaigrizzlies now. Another interesting clash, because when you saw in the points table, the 2 points are really going to matter from now on, because if you pick up the points earlier in the league, you don't have pressure towards the end. Yeah, I mean, another game where these two sides lost their first game. Delhi lost and Mumbai lost as well. So a matchup and an opportunity for one of those two sides to open their account. There you have. Of course, we are gearing up for the next game. Before that, we head into a short little break. Don't go anywhere. All new Pulsar Mania's here. Maniacs wanted. Lenskart. Download the app or visit your nearest store. लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं।